Assalamualaikum everyone, my name is Muhammad Dawar Zahid, and in this video I'm going to be talking about the top 5 mistakes that students make in the start of their A2, or I would say that throughout their A2 slash second year, which basically really mess with their chances of getting into a good university, especially talking about a good medical school. So let's get started. Alright, guys, so this is one of those things that I see every single year, and that is that basically you don't plan ahead in regards to anything at all. It's like, you're treating this like another school year कि हाँ भाई बस अब हमारा A levels बस आखिरी साल है या बस second year FSC का, and you just treat it just like it. You need to understand that now, unfortunately, school or slash college, for some reason FSC people call their school college, पता नहीं, बड़ा confusing सी चीज़ होती है, पर खैर you need to understand that this is now ending, and now the second step of your life is basically starting, and that is your university. So I see kids every single year that come to me in literally January. इसका मतलब है कि how much time do they have? January, February, March, April में 5 महीने से कम उनके पास रह चुके होते हैं. They're asking me कि oh, and by the way, these kids now they're 50% ज़्यादा या 80% A levels हो चुका है या और FSC second year हो चुका है. They're like oh, we're unsure of what we want to do. So guys, if there's anything at all, you need to plan ahead. ठीक है, you still have time right now, but the problem is कि if you delayed this to January February, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, आपको गैप ईयर लेना पड़ जाएगा. You need to plan ahead that oh, okay, do I want to do this career, do I not want to do this career. ठीक है, and if I was you, I would first of all decide on my career right now कि अच्छा क्या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा लेट हो चुका है. You should have decided this in like A1. लेकिन चलो खैर, career, and then second you also need to decide your university. ठीक है, you need to understand, sorry my pencil is tweaking a bit. Alright, so you need to understand कि जो अच्छी बड़ी universities होती हैं इनके लिए you need to start your preparation अभी से. ठीक है, you need to basically start researching right now. So plan ahead. ठीक है, plan ahead for your career, plan ahead for the university, know which exams you're supposed to give, know which resources you're supposed to have with you and everything. So एक अच्छा सा आपके पास idea at least इस time पे हो जाना चाहिए है. ठीक है, so don't be one of those kids who come to me like in March and 2 महीने में A level slash board के exams हैं, and then you have your medical school entrance exams in like a couple of months and you're like oh, we don't know what to do. ठीक है, at least have the knowledge. अब तो इतना आसान हो चुका है, you can literally ask ChatGPT anything कि क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा टेस्ट देना है कौन सा टेस्ट नहीं देना. So I would strongly suggest that do your research. Alright guys, so this is the second biggest mistake that I've seen kids make, and that is that they just don't focus on their A levels, they don't focus on their FSC exams. So है क्या कि, and like I've seen this more so in like the better schools I would say, जहाँ पे थोड़ा बहुत समझ लें कि पार्टी का कल्चर है. ठीक है, so what happens is you're like oh, it's my last year and I just don't want to really study, and that's kind of the same energy that I also had. I was like okay, this is my final year, high school ka aakhri saal hai. I had a lot of freedom and I was like I don't really want to study, but shukr Allah ka, I had a mentor, he talked sense into me, he was like don't do that. But the thing that you need to understand is कि if you're planning कि oh अच्छा February March में जाके देखेंगे पढ़ाई का, तब देख लेंगे कैसे करनी कैसे नहीं करनी, it will, you will not survive. You need to understand, you need to focus on your A levels slash FSC, and by that I mean कि अगर A levels के हो तो A levels को सही से करो, FSC के हो तो FSC को सही से करो, because you need to understand. And again for me this is like a हर साल होता है ये कि I see kids who come to me in June, ठीक है, they have just done their A levels slash board के exams उनके भी ख़त्म हुए हैं, and they're like oh अच्छा we want to give the AKU test, we want to give the MDCAT, and अब हम कहाँ से तैयारी start करें. When I talk to them I find out कि माशाल्लाह से इन बच्चों ने तो, इनसे जब मैं पूछता हूँ they're like oh यार A levels में तो हमें ये चीज़ वीक लगती थी, ऐसे होता था वैसे होता था. You need to understand if you have any weak topics, ठीक है, in जून तक कोई weak topics हैं, there is a 99% chance that you're taking a gap year. There is a 99% chance that you are taking a gap year, and I can say this with a lot of surety. ठीक है, किसी चीज़ को नहीं सही से पढ़ोगे तो फिर उस टाइम पे we don't have the time to do it. You need to understand that okay yeah, go and enjoy your time. I understand this is never going to come back, but please for God's sake don't mess up your academics. Alright, your internal grades, they are important. पढ़ना है, ठीक है, because you need to understand every single thing. It is just impossible. मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरे पास कोई बच्चा आया हो जिसने ए लेवल्स में सीरियसली पढ़ाई की ही नहीं है, ए लेवल्स को मजाक समझा है या एफएससी को मजाक समझा है, ठीक है, सही से पढ़ाई नहीं है. नाउ दे लाइक ओ माय गॉड आई हैव माय एंट्रेंस टेस्ट एंड आई एम गोइंग टू एस देम. आई हैव नेवर सीन देम डू इट. ठीक है, आई हैव
to this date never seen a single student do that, because अगर बेस ही नहीं बनी हुई, तुम्हें चीज़ों को आता ही नहीं है, you don't even know the words, you don't even know the meaning of the words, how are you going to be applying them in the entrance tests like AKU, शिफा, MDCAT, नाम्स, क्या क्या करोगे? ठीक है, तो प्लीज़. Alright guys, so the third thing is going to be your extra co-curricular activity. So basically everything aside from academics, okay? So you need to understand aside from academics. So you need to understand that if you're planning on basically going to, AKU, or if you're planning on going to a good medical college, in the sense aside from the government bus, जैसे आपने कहा कि अच्छा मैंने शिफा जाना है या मैंने आल खान जाना है, especially for AKU, you need to understand you need to have good extra co-curricular activities, ठीक है? And I'll talk about this in detail in another video कि कौन से extra co-curriculars होते हैं, कौन से नहीं होते. But the thing that I need you to understand is this is one of those things. आप ऐसे नहीं कर सकते कि ओ मेरा AQ का टेस्ट सही होगा, फिर उसके एक महीने में in the 1 month I'll do some internships, I'll do some things. No guys, you need to plan way ahead. You need to start planning way ahead. मेरे स्कूल में क्या होता था कि basically because people were planning on applying abroad to the US, so they would basically be starting their activities from grade 9. तो मेरी जो सारी प्रोफाइल थी वो basically grade 9/O1 की बनी हुई थी, यानी कि I did my first internship back in O levels का first year, I did my first competition back in O levels का first year, and उसके बाद से I've been consistently doing them. So that is one thing that you need to understand. It gives a very bad impression कि आपकी सारी activities आखिरी 2 महीने की हैं, because they're not stupid, they're able to see कि okay this kid did not have good activities and just के वो प्रोफाइल अपनी बिल्ड करने के लिए आखिरी 2-3 महीने में किया. You need to understand right now you have a lot of time. You have August, September, October, November, December, January, February, March. मैं 8 महीने कह दूंगा. April में I don't think you should be focusing on that because you can mess up your grades. But right now you have a lot of time. So 8 months, if I was you, I would really focus on building my extra co-curriculars, doing internships, doing research work, attending, if there's any conferences or chalo conference, any science competitions, ठीक है, doing public speaking and all of these things. क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ अच्छी होती है, क्या चीज़ बुरी होती है. We'll talk about this in another video because that's like a whole 30-minute topic. But please, extra co-curricular activities, that is one thing. वक्त गुजर जाएगा, बाद में नहीं कर सकोगे. Alright guys, so moving on to the next point, and that is that you don't start off with the academics specifically, and I'm talking about, I know I've talked about not focusing on A level / FSC, ठीक है, but the thing that you need to understand is कि आपने भाई entrance tests भी देने हैं. And just to name a few, there's going to be the AKU test, which by the way is incredibly competitive, which is followed by the MDCAT, which is followed by the NUMS का exam. उसके बाद you're going to be having शिफा. If you're planning on ज़ाउद्दीन वगैरह तो उनके अपने exams होंगे, ठीक है. AMC का अपना exam होता है. There's so many exams and you need to understand that the syllabus for these exams is a lot. और एक चीज़ जो बच्चे नहीं understand कर पाते वो ये है कि so these exams, they're going to be happening anywhere from July all the way till September, right? The problem that you need to understand is कि आपने basically आप फारिग होगे if you're giving composite, ठीक है, चलो composite AS वगैरह सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, A2 वगैरह को छोड़ दो, आप फारिग होगे. Let's assume कि you're getting free in the first week of June. So June 7th को आप फारिग हो रहे हो, ठीक है. You will have less than 1 month for the AKU test. You will have less than 2 months, 2 to 3 months होंगे आपके पास MDCAT के लिए. तो आई नो ऑन पेपर इट साउंड्स वेरी फाइन कि ठीक है यार 1-2 महीने में पढ़ लेंगे, इतना क्या बड़ी बात है. एक बात प्लीज अपने जहन में रखो कि अप्रैल एंड मे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द मोस्ट स्टूपिड किड्स. दिस इज व्हाट आई डिड. आई स्टार्टेड स्टडीइंग इन अप्रैल. मैंने अप्रैल और मे के 2 महीने पढ़ाई की थी, उससे पहले मैंने सीरियस पढ़ाई की भी नहीं थी, ठीक है. सो दीज 2 months आई वॉज लिटरली स्टडीइंग 12 hours एवरी सिंगल डे, ठीक है. एंड देन उसके बाद आई saw my friends get free. मेरे दोस्त सारे फ्री हो चुके थे. They're going on north trips, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और मुझे बैठ के अब AKU, MDCAT, नाम, शिफा, इन सब एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, ठीक है. So it is very difficult and you will get burnt out. This is the biggest thing that you need to understand. This is the biggest. आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि ओ अच्छा ये तो इतना अच्छा स्टूडेंट था, he had like 4 A stars in A levels, O levels में इसके जी 10 A star 4 A थे, ओ इससे तो MDCAT ही नहीं क्लियर हुआ, ओ इससे तो AQ का टेस्ट ही नहीं क्लियर हुआ. वो ये नहीं होता कि those kids are dumb. The problem is कि they basically don't have the correct planning, and what ends up happening is in the end
they end up getting burned out. ठीक है, किसी ने गाइड नहीं किया प्रॉपरली, किसी ने बताया नहीं था सही से, और फिर होता क्या एंड पे कि वो तैयारी शुरू करते हैं जून के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में जाके, द एग्जाम इज इन लेस देन 1 month एंड यू जस्ट गेट बर्नड आउट. तो प्लीज डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. स्टार्ट राइट नाउ. ठीक है, स्टार्ट यू नो ऑन माई चैनल आई हैव सो मेनी फ्री वीडियोज, उनको जाके देख लो, सिलेबस को डाउनलोड करो, गो एंड लुक एट इट. ठीक है, बाय द FSC बुक्स. ठीक है, जस्ट गो थ्रू देम. कुछ भी, अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. स्टार्ट डूइंग एनीथिंग एट दिस पॉइंट and it will definitely help take off the load in the future. All right. Alright guys, so this is मैंने इस पॉइंट को मैंने इन बाकी चारों से थोड़ा सेपरेट करके यहाँ पे लिखा है. दैट इज वेस्टिंग टाइम एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो आई थॉरली एंजॉयड माई ए लेवल्स. मतलब मैं जनरल सोचता हूँ कि जो मेरा A2 का साल था, सो माई A2 आई डिड इट, आई एम गोइंग टू साउंड रियली ओल्ड नाउ, बट दैट वाज 2021 to 2022 एंड आई रियली एंजॉयड इट बिकॉज मेरा हिसाब क्या था कि आई basically did not waste time. And what do I mean by wasting time? ठीक है, I mean bed rotting, कि बिस्तरे में लेट के 8 घंटे स्क्रीन को खींचना. ठीक है, और जस्ट वेस्टिंग टाइम गोइंग टू एन एकेडमी जहाँ पे आपको पता है कि आपको कोई फायदा नहीं हो रहा. यू जस्ट गोइंग देयर जस्ट टू गेट दैट फॉल्स सेंस के ओ माई गॉड मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बट कोई फायदा नहीं हो रहा. ठीक है, इट्स डूइंग स्टफ लाइक फॉर एग्जाम्पल wasting time in unnecessary things. Like I had a student and मैं उससे काम देता था and I would be like, okay, do these things XYZ, and the next day she'd be like, oh, I wasn't able to do it. I was like, why? She's like, oh, मेरे घर में लड़ाई हो रही थी. So I was like, okay, किसकी लड़ाई हो रही थी? She's like, मेरे मोहल्ले में लड़ाई हो रही थी, तो आई वॉज स्पेक्टेटिंग दैट. आई वॉज लाइक यू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ इन लेस देन 6 months एंड यू आर सिटिंग हियर स्पेक्टेटिंग फाइट्स. तो प्लीज डोंट डू दैट स्टफ. आई डोंट थिंक that you should lock yourself in a room and just study all the time, because I did not personally do that. Okay, my friends did not do that and we made it to AKU, right? And you need to understand, enjoy it, but at the same time don't waste your time doing stupid things. That is the biggest thing that you guys need to understand. So मैंने क्या किया था कि I had this habit that I would basically try कि okay, मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो स्कूल में हो रहा है, चाहे मैं क्लासेस में जा रहा हूँ चाहे मैं क्लासेस में नहीं जा रहा, बिकॉज इन A levels there's this big thing that you tend to not go to classes, right? I used to do that because I was a prefect. मुझे कोई वो नहीं था इस तरह से कंपल्शन नहीं थी क्लास में जाने की, तो मैं नहीं जाता था क्लासेस. मैं जाता ही नहीं था क्लासेस में. आई वुड जस्ट एंजॉय द टाइम विद माय फ्रेंड्स. बट मैं एक चीज़ मेक श्योर करता था कि ओके ऑन द वीकेंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू जस्ट टेक आउट 2 to 3 hours पर डे. फ्राइडे को 2-3 घंटे बैठा हूँ, सैटरडे को 2-3 घंटे बैठा हूँ, संडे को 2-3 घंटे बैठा हूँ, यानी कि 10 घंटे ओवर द वीकेंड. ठीक है, एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि आई वुड जस्ट ट्राई टू कवर जो पढ़ाया गया. ठीक है, and I think that is the biggest thing that basically helped me. कि I was able to be on top of things, and then in the end जब April और May का time आया, तो जब थोड़ी सी जान मारनी थी, तो I already had an orientation and I already knew the syllabus. So please guys, don't waste this 1 year. Enjoy it and study properly, but at the same time don't just ऐसे नहीं करना कि स्कूल से छुट्टी की है और घर में बैठ के पूरा दिन सोते रहे हो. ठीक है, रात को बैठ के मूवीज देखते रहे हो. डोंट डू दैट. गो एंड एंजॉय, बिकॉज trust me, once school ends, you're never going to see these people again. Like मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, like we were so close. I haven't seen him for the past 5 years. ठीक है, because he's gone to the US. तो 5 साल हो गए मुझसे मिला नहीं हूँ, and that will happen to you guys as well. So please, जनरल कह रहा हूँ, go and live life.